अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैं एक स्लाइड शेयर करने जा रहा हूँ और इसको आपने करके लेना है। शाबाश। नाउ एक्सरसाइज नंबर 7, मेक प्रेसी ऑफ द गिवन एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का आपने मुझे प्रेसी लिख के देनी है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रेसी राइटिंग कि हमने 1/3 लिखना है गिवन पैसेज को। एक ही पैराग्राफ में हमने लिखना है, इवन इफ 5, 2, 3 और 4 different passages are given, we have to write preci in one and a single passage. हमेशा से प्रेसी एक ही पैराग्राफ में, एक ही पैसेज में लिखी जाती है। नेक्स्ट ये है कि आप पर्सनल प्रोनाउंस सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन प्रोनाउंस लिखेंगे। आप आई, वी, ही, आई, वी या यू, ये 3 प्रोनाउंस आप यूज नहीं कर सकते। हमेशा से आपने थर्ड पर्सन प्रोनाउन में लिखनी। इसी तरह प्रेसी के हवाले से याद रखिएगा कि टेंस कौन सा यूज करना है, जिस टेंस में ओरिजिनल प्रेसी है। अगर ओरिजिनल प्रेजेंट में है तो आप भी प्रेजेंट में लिखें, ओरिजिनल पास्ट में है तो आप भी पास्ट में लिखें, फ्यूचर में है तो आपने भी फ्यूचर में लिखना है। इन शॉर्ट आपने उसी टेंस को यूज करना है जिस टेंस में ओरिजिनल प्रेसी दी गई। इसी तरह नेक्स्ट ये है कि मैंने कहा था एग्जाम्पल्स, जो डिटेल एग्जाम्पल्स हैं या एक्सपेंड एग्जाम्पल हैं, उसको आपने रिमूव नहीं करना है। लेकिन जो सीरीज ऑफ एग्जाम्पल है, किसी चीज का सीरीज दिया गया है, तो फिर आप उन कंप्लीट जो सीरीज है उनको आप रिमूव करें। और इस तरह कुछ और रूल्स भी मैं बता चुका हूं कि आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। प्रेसी इज ऑलवेज रिटन इन योर ओन वर्ड्स। आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। डू नॉट बोरो वर्ड्स फ्रॉम द ओरिजिनल पैसेज। ज्यादा से ज्यादा 5 to 7 वर्ड्स आप बोरो कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और इस तरह टाइटल के हवाले से भी बात हुई थी कि टाइटल में आपने क्या करना है, आपने 7 वर्ड से एक्सीड नहीं करना है। आपने रेडीमेड टाइटल नहीं लिखना है। आपने कोशिश करनी है कि जो कीवर्ड्स हैं वो टाइटल में भी यूज्ड हो, और फ्रेज के फॉर्म में लिखे, सेंटेंस के फॉर्म में टाइटल ना लिखे। इसी तरह मेन थीम को माइंड में रखते हुए टाइटल लिखे, माइनर थीम्स पे ना लिखे, मेन थीम के ऊपर लिख लें। चलिए स्टूडेंट्स, आप स्टार्ट करें। इस पैसेज को मैं जरा रीड आउट करके भी दे देता हूँ। कहते हैं, स्पीच इज अ गॉड ब्लेसिंग बट इट कैन आल्सो बी अ ग्रेट कर्स। For while it helps us to make our intentions and desires known to our fellows, it can also, if we use it carelessly, make our attitude completely misunderstood. A slip of tongue, the usage of an unusual words or an ambiguous words, and so on, may create an enemy where we had hoped to win a friend. Again, different classes of people are using different vocabularies, and the ordinary speech of an uneducated man may strike an uneducated listener as showing pride. Unwittingly, we may use a word which bears a different meaning to our listener from what is us to man of our own class. Thus, speech is not a gift to use lightly without thought, but one which demands careful handling. Only a fool will express himself alike to all kinds and conditions of man. So, students, आप देख चुके हैं. This is a short passage, and you are supposed to make ratio of it. You have to precise it to 1/3 of the original passage. शाबाश, start करें. I am waiting, और इसको सब ने अभी इसी टाइम करना है ताकि मैं आपको कुछ चेक करके दे दूं कि, और आपको मिस्टेक्स भी रेक्टिफाई करके दे दूं। आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको अपने मिस्टेक्स का भी पता चल जाएगा। वन थिंग स्टूडेंट्स, आई एम ऑलवेज आस्किंग यू दैट इफ यू कम अप विद अ रॉन्ग आंसर, और इफ यू कम अप with the wrong passage, it doesn't make, it is not an issue to be worried. You need not to be worried. I am here to rectify your mistakes. Unless and until you do not make mistakes, you will not be able to learn anything. So
we learn, and we always learn by dint of mistakes. So these are mistakes that gives an opportunity to learn and to rectify ourselves and of course our mistakes. आप अपनी मिस्टेक्स तब तक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब तक आप मिस्टेक्स कर नहीं लेते। तो आप मिस्टेक्स करेंगे तो आप इसको रेक्टिफाई भी करेंगे। शाबाश। आप जनरली इसमें देखें कि मेन कौन कौन सी बातें हुई है, मेन पॉइंट्स कौन से हैं। जो रिपीटिशन है, जो डिटेल में अननेसेसरी प्रोसेस, सेगमेंटेशन प्रोसेस में बता चुका हूं ऑलरेडी कि आप सेगमेंट्स में डिवाइड करें। सेगमेंट्स का मतलब ये है कि इसमें टोटल आइडेंटिफाई करें कि टोटल मेन थॉट्स कितने हैं, मेजर क्या बात हुई है। अभी फॉर एग्जांपल आपसे दो बातें की कि स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग बट इट कैन आल्सो बी अ कर्स। ब्लेसिंग भी है, कर्स भी है। फॉर अ व्हाइल इट हेल्प्स अस टू मेक आवर इंटेंशन। तो इफ के दो पार्ट्स लिखे आप एक ही बात लिखे कि ऑल दो स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग बट it can be a curse if we use it carelessly। बस इतनी सी बात है कि though it is a great blessing या speech is a great blessing but it can be a curse या it can create hurdles for us। अगर आपने अपने वर्ड्स में लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि speech is a gift of God। speech is a gift of God। blessing की जगह आप gift of God लिखते हैं। The speech is a gift of God if you use it correctly या carefully। बस इतनी सी बात, आप बाकी ना लिखे। जस्ट मैंने ये 3 सेंटेंसेस इसको मैंने एक ही बात में की कि स्पीच कैन बी अ ग्रेट गिफ्ट इफ इट इज यूज्ड केयरफुली। बात ही खत्म हो गई। ये मेरा स्पीच से लेके मिसअंडरस्टूड तक कंप्लीट बात मैंने एक सेंटेंस में। फिर है कि स्लिप ऑफ टंग सो मेनी मे क्रिएट एनिमी where we had hoped to win a friend। अभी स्लिप ऑफ टंग है, यूजेज ऑफ अनयूजुअल वर्ड्स है, एम्बिगुअस वर्ड्स है। ये सारे वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप एक वर्ड बता दें कि इफ स्पीच इज यूज्ड, जनरली बता दें कि इफ इट इज यूज्ड we can make an enemy, a friend or enemy। इतनी सी बात है। Again, different classes of people are different vocabularies and the ordinary speech of an uneducated man may strike an uneducated listener as showing pride unwittingly। We may use a word which bears a different meaning to our listeners from what it does to men of our own class। फिर आप just लिखें कि different group of people have different speeches or different speech and it can be understood only in its own context। बस इतनी बात है। बाकी ये जरूरत नहीं है कि प्राइड है, ये है, वो है। बस मैंने एक बात की कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट वोकैबुलरीज होते हैं या वर्ड्स होते हैं और वो उस कॉन्टेक्स्ट में हम अंडरस्टूड कर सकते हैं कि स्पीच वेरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि स्पीच वेरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल एंड ओनली अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल अंडरस्टैंड अ स्पेसिफिक vocabulary, a specific set of vocabularies। बस इतनी सी बात। लास्ट क्या है कि स्पीच इज नॉट a gift to use lightly without thought but one which demand careful handling। so आप लिख सकते हैं only a fool will express himself alike to all kinds and condition of people। मैंने लास्ट में क्या कहा कि speech shall be used very carefully, एक बात, and
It shall not be type of people. बस इतनी बात। ये मेरी प्रेसी हो गई। मैंने बिल्कुल जनरल प्रेसी की, जनरल मैंने थॉट को अपने वर्ड्स में अंडरस्टैंड करे, अपने वर्ड्स में भी। ये मेरी कंप्लीट प्रेसी है। शाबाश, आप भी इसको करें। इसमें टोटल कितने पॉइंट्स हैं ये देख लें, मेजर मेजर पॉइंट्स। आप एक रफ ड्राफ्ट पहले आगे अपने लिए अकाउंट बना सकते हैं, और फिर उसमें मेजर चीजें उनमें से जहां पे रिपीटिशन हो, जहां पे अननेसेसरी थॉट्स टाइम एंड अगेन रिपीट हो चुका हो, उसको आप एड्रेस करें, उसके अवॉइड करें। इट्स एज सिंपल एज इट इज। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, और आपको ये बात बताना चाहूंगा कि देखिए ना, आप प्रैक्टिस करें। CSS इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप एक्सपीरियंस करें चीजों को, आप प्रैक्टिस करें, आप अपनी तरफ से ट्राई करें। देखिए ना, एक बंदा है वो मैथमेटिक्स में PhD है, और एक दूसरा बंदा है वो मैट्रिक में मैट्रिक के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर पाए। अगर PhD में जो मैथमेटिक्स है, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करता मैथमेटिक्स का, तो वो एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। लेकिन एक लेमैन है, एक कॉमन स्टूडेंट है, वो प्रैक्टिस करता है डेली बेसिस पे, तो वो एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा, वो उसको सॉल्व कर पाएंगे। PhD वाले कर पास नहीं या सॉल्व नहीं कर पाए। रीजन क्या है? प्रैक्टिस की। तो आपसे यही गुजारिश है कि जनाब आप प्रैक्टिस किया करें, लिख लिया करें, गलत लिखे लेकिन लिख लिया करें। मैंने कभी भी आप लोगों को ये नहीं कहा है कि आप मुझे सही लिख के दें। अगर आप सही लिख सकते थे तो आपको नोवा ज्वाइन करने का किसने कहा? ये नोवा ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? तो यू हैव ज्वाइन नोवा बिकॉज यू वांट टू लर्न, एंड दिस इज all through your mistakes that you learn. Speech is a blessing and a curse as well. Its reckless use can make us misunderstood and can turn potential friends into enemies. Very good, Rana Usama. Very good. Vocabularies in speech must be used considering the surroundings. Very good. The gift of speech demands meticulous conduct. क्या बात है? So this is a perfect précis of the given passage. I didn't come across any sort of mistake in your writing. So I hope that you will get CSS done inshallah. अगर आप इस तरह लिखते हैं अपने पेपर में तो inshallah you will get it done. बस ये है कि आप प्रैक्टिस इस तरह कंटिन्यू रखें तो बेस्ट है। देखिए ना, इसने 4 चीजें हैं या 5 चीजें हैं, 5 पॉइंट्स इसने वो की। सबसे पहले स्पीच इज अ ब्लेसिंग एंड एज वेल एज अ कर्स, एक बात उसने की। फिर इसने कहा कि इट्स रेकलेस यूज कैन मेक अस मिसअंडरस्टूड एंड टर्न पोटेंशियल फ्रेंड्स इनटू एनिमीज, 2 बातें। वोकैबुलरीज इन स्पीच मस्ट बी यूज्ड कंसीडरिंग इन सराउंडिंग्स, 3 बातें। और लास्ट में इसने क्या कहा कि द गिफ्ट ऑफ स्पीच डिमांड्स मेटिकुलस कंडक्ट। इतनी सी बात है। सो इट इज एज सिंपल एज इट इज। 4 मेन पॉइंट्स है, वही 4 मेन पॉइंट्स इन एक्सपेक्ट करके आपको लिखिए।
शाबाश फ्रेंड्स, बिग हरी अप। इतना मुश्किल तो नहीं है जितना आप टाइम लगा रहे हैं। ओके, आगे पूछे हैं। क्या लिख रहे हैं कि स्पीच कंटेन्स प्रोस एंड कॉन्स। वेरी गुड। इट एक्सपोजेस मोटिव्स ऑफ फेलो पर्सन। ओके, मिसयूज ऑफ थॉट कैन क्रिएट डिफरेंसेस बिटवीन पर्संस। ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल स्पीक। स्पीक्स नहीं आएगा, आप एस हटा दें। स्पीक डिफरेंट थॉट्स। ठीक है। दोज ओनली अंडरस्टैंड इन which or only, those नहीं, which or only understand, which can only be understood of इस तरह, which can only be understood in its own context. Hence a careful thought is the prerequisite, is the नहीं लगाएं, is a prerequisite for observing the blessing of speech. Very good. The nature of thought, very good. आकिब हुसैन। अच्छा, मारूफ आप क्या लिख रहे हैं कि speech is a blessing and it can also be a menace. It is a blessing, it can be a menace if we use it carelessly. ठीक है, very good. It is a great way of, it is a great way of, और लगा दें, it is a great way of expressing thoughts, but its careless usage can cause misunderstandings between people. आप to us ना लगाए, क्योंकि हमने ये कहा था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सेकंड पर्सन प्रोनाउन नहीं लगाना है, आपने थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो आपने क्या लगाना है, टू पीपल आप लगा दो us की जगह. People have different ways of speech and can be understood by the same class. बिल्कुल ठीक है. The gift of speech should be used wisely. Should be used, ed लगा ले use के साथ, should be used wisely. Very good. मारूफ, अच्छा लिखा है आपने. अक्सर आपने क्या लिखा है कि though speech is a blessing but it can also be a curse if we use it. अभी आपने we word use किया है, तो अगेन मैं आपको भी यही कहूंगा कि if people use it recklessly, आप इस तरह लिख लें कि आप इस तरह लिखें कि if it is used recklessly, लेकिन आप we word use ना करें, क्योंकि हम प्रेसी में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज नहीं करते. हम हमेशा से प्रेसी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में लिखते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में लिखते हैं. नेक्स्ट ये है कि इट्स रॉन्ग यूज कैन मेक आर एनिमी नहीं आएगा. इट्स रॉन्ग यूज कैन मेक एनिमीज मोर देन फ्रेंड्स. वी शुड यूज वोकैबुलरी, वी शुड यूज ना करें. वन शुड यूज, आप ये लिखा सकते हैं कि वन शुड यूज वोकैबुलरी by keeping in mind the audience. इस तरह भी आप लिख सकते हैं. Speech is a gift for those who knows the value of words. Very good. अच्छा लिखा है आपने. Next है मुकद्दिसा मलिक. A person should think before he speaks, as it enables him to choose the right words which are necessary to avoid any misunderstanding by the fellow beings. A wise person must understood that literate people will interpret his words differently than the illiterate people. So he should be careful with his speech. बिल्कुल ठीक है. I agree with you, Mukaddisa. Very good. Yes, students. बाकी students, शाबाश. You are running out of time.
अच्छा मरियम, आप क्या लिख रहे हैं कि स्पीच इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड इफ इट इज यूज्ड केयरफुली। वेरी गुड। इफ नॉट, फिर कॉमा आपने करना क्या है मरियम सजाद, मैं आपको बताता हूँ। आपने लिखना है कि स्पीच इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड इफ इट इज यूज्ड केयरफुली, फिर आप फुल स्टॉप लगा लें। केयरफुली के बाद फुल स्टॉप लगा लें। आप आगे के लिखें कि इफ नॉट फिर कॉमा इट विल टर्न फ्रेंड्स इनटू फूड, इट विल टर्न फ्रेंड्स इनटू फूड्स, आप इस तरह लिखें, उसके साथ एस लगा लें, तो ये सही सेंटेंस बनता है, स्ट्रक्चर सही हो जाएगा, वो कॉमा सेमीकोलन कोई इश्यू नहीं होगा पंक्चुएशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल हैव डिफरेंट स्पीच and speech demands the voice choice of words because they have impact on surroundings। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आई एग्री। शाबाश स्टूडेंट्स। शाबाश स्टूडेंट्स, बिग बिग, हरी अप। चलिए स्टूडेंट्स, क्लास को वाइंड अप कर लेते हैं। बहरहाल ये है कि स्टूडेंट्स, दिस वुड बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप राइटिंग करें, चेक करवाया करें अपनी राइटिंग्स को, और इन दिस वे यू विल बी एबल टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। मैं टाइम एंड अगेन यही कह रहा हूँ कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको 10 आवर्स तक पढ़ाता रहूंगा, पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करिए, अपनी असाइनमेंट करवाया करें। चले, फॉर टाइम बीइंग अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड। ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए। और